etc. Okay. Now, right next, aldehydes also get oxidized. Get oxidized by filling solution and tolerance reagent. And tolerance reagent, which are weak oxidizing agent. Which are weak oxidizing agent. But ketones do not go. Ketones do not show oxidation with filling solution or tolerance reagent. Okay? Write this down and then write the topic. First of all, tolerance test. Number 1, tolerance test. Now in this tolerance test, if you have aldehyde and tolerance reagent, then you will see a silver mirror in the solution. This is also known as silver mirror test. Silver mirror test. Okay, so aldehyde gives positive silver mirror test and ketones do not give silver mirror test. So in this tolerance test, what is the tolerance reagent? Tolerance reagent is ammonical silver nitrate. And when you have aldehyde reacting with ammonical silver nitrate, now this is going to be positive. This is the important ion here. Otherwise, you can also write AgNH3 whole twice and NO3. NO3 is having -1 charge and this is having a plus charge. Okay, but the important thing is AgNH3 whole twice positive. In basic condition, alkaline condition, OH negative. The aldehyde will convert to carboxylate ion, COO negative, plus we will get Ag plus H2O and ammonia. This Ag is, it shows silver mirror, okay, in the solution. And this is the positive tolerance test right here. What is tolerance reagent? Ammonical silver nitrate. Is right. On warming aldehyde with freshly prepared, aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate, ammonical silver nitrate. A bright silver mirror is formed. A bright silver mirror is formed due to production of silver. Ketones do not give silver mirror test.
After this, you will write second, that is Felling test. See, Felling test, we use Felling solution here, and Felling solution is always freshly prepared. Felling solution is prepared by mixing Felling solution A and Felling solution B. In Felling solution A, that we say Felling A, there is copper 2+ ions, and generally we get copper 2+ ion from copper sulfate. Okay, from CuSO4 we get this copper 2+, but this copper 2+ is my main ion, which is going to be the reactant species. The Felling solution B, this Felling B, it contains alkaline sodium potassium tartrate. Okay, alkaline sodium potassium tartrate is, you have 2 carbon atoms. Both of these carbon atoms will have OH, and both of this will have COO negative, and one of this negative will be stabilized by K positive, and the other COO negative will be stabilized by Na positive. ठीक है? ऐसे तो अगर आपके पास यहाँ पे Na positive and K positive नहीं होके, if you had hydrogens here, it would be COH and COH, it would be known as tartaric acid. Now this is a tartrate, and it is a tartrate of sodium and potassium in the alkaline medium. That is why it is known as alkaline sodium potassium tartrate. Okay, we have this in Felling solution B. Then we mix Felling A and Felling B. Which gives us Felling solution or the Felling's reagent. Okay, which is deep blue in color. Okay, this deep blue is first of all due to copper 2+ and also because of this tartrate ion. जिससे complex कर जाता है, copper 2+ complexes with the sodium tartrate. Okay, now we take this. We have aldehyde plus Felling solution, which is deep blue in color. When you mix them, and if you see red PPT, that means this was aldehyde. Okay, so in terms of reaction, we have aldehyde RCHO. For Felling solution, you will just write copper 2+ in alkaline medium OH negative. इससे आपको मिलेगा सबसे पहले RCOO negative. That means aldehyde has been oxidized. Plus you are going to get Cu whole twice. Oh, this is the cause of red PPT. Okay, please write this down. Done everyone? Yes or no? Please tell me. All of you done? Good. Anyone still writing? No. So this Felling test and tolerance test, these are very useful. आपके पास जैसे कोई भी सवाल आ जाए जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि how will you distinguish between this aldehyde and ketone, है ना? तो aldehyde में you will get, for example, acetaldehyde and acetone. How will you distinguish? So say by using tolerance test or Felling test. Acetaldehyde will give the tolerance test, will give the silver mirror test, but acetone is not going to give me the silver mirror test. Okay, right. Next, third one, which is the haloform reaction.
Please write. This is shown by aldehyde and ketones with CH3 C double bond O. That means you should have methyl attached to the carbonyl carbon. Okay, shown by aldehyde and ketones with this fragment. The reagent that we use is, we use sodium hypohalite, and sodium hypohalite is made by reacting sodium hydroxide with any halogen. ठीक है, तो either you can be given this, और आपको क्या दे सकते हैं, या फिर they will give you this NaOX. ठीक है, तो ये भी दे सकते हैं आपके पास, that is because it is going to give you sodium hypohalite, or they will directly give you the sodium hypohalite. This can be Cl and Br and iodine. Right here it forms corresponding carboxylic acid with one less carbon and halo form. Okay, so for example, if you have R, C double bond O, CS3. Okay, so for me, this fragment was important. If this fragment is present, that means it is going to give me the halo form reaction. So if I react this with NaOCl, then I'm going to get R, C double bond O, and then OH. ठीक है, तो ये CH3 आपका चला गया, and this CH3 is only forming CHCl3. This is what? Chloroform. ठीक है, so for example, if you have double bond O, CH3, NaOH plus iodine, तो आपको यहाँ से in C2 क्या मिलेगा? That means in the reaction itself, you are going to get NaOI, which is going to give you carboxylic acid, 1, 2, 3 carbon atom, C double bond O, OH plus CHI3. This is iodoform, which is yellow PPT. Okay, and since this is yellow PPT, we can also use haloform or rather iodoform reaction to detect this type of fragment. Okay, if you have iodoform reaction, that means you have an aldehyde or ketone with a methyl attached to the carbonyl carbon. Please write next. Okay, reaction with sodium hypoiodide, it forms CHI3, which is yellow in color, and therefore iodoform test is used to detect presence of methyl carbonyl fragment. Okay, जैसे आपके पास example, you have pentane 3-on and pentane 2-on. ठीक है, this is pentane 3-on. And this is pentane 2-on. तो बताइए ए और बी में से कौन सा देगा हालोफॉर्म रिएक्शन, और अदर आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा देगा, ए और बी? प्लीज सेंड द आंसर इन चैट.
which will give iodoform test, or how will you distinguish between these two molecules? Which will give positive iodoform test. इन दोनों में से कौन सा देगा बताइए, ए और बी में से? बाकी लोग भी आंसर करें, इट्स वेरी इजी। नहीं आ रहा तो दोबारा एक दो बार पढ़े कि कौन सा देता है, ठीक है? रीड वॉट एवर यू हैव रिटन। आतिफ, योर आंसर इज करेक्ट दो। Others, please answer. Akshay, Hamza, Hiba, Kinza, Kulsum, Lubna, please answer, guys. Correct, Kinza. Waiting for others. Kulsum, Lubna, please answer. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है गाइस? Yes, Hamza, correct. What happened, Kulsum? Kulsum and Lubna, please turn your mic on. Tell me what happened. नहीं आ रहा आपको? Oh my God, mic भी नहीं on करना है. Yes, Lubna, tell me. Lubna, what happened? Turn your mic on, Lubna. हाँ, Lubna, आप बताइए, आपको नहीं समझ में आया क्या हुआ, क्या क्वेश्चन है? No, sir. रिएक्शन समझ में आया? जोर से बोलिएगा. यस लुबना, रिएक्शन समझ में आया आपको? लुबना, हाँ या ना जल्दी बता दीजिए, आप इसी में इतना टाइम लेंगी. अगर नहीं समझ में आया तो नहीं बोल दीजिए, या तो हाँ बोल दीजिए, तुरंत बोलिए, लेकिन ना रिएक्शन आपको समझ में आया या नहीं आया? No, sir. लुबना, आंसर ना, व्हाट हैपेंड? I said, sir, no, I didn't understand. अच्छा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, आपकी आवाज ही, एक सेकंड जोर से बोलिए भाई, आप लोग की आवाज ही नहीं आती है. लुबना, कैन यू से समथिंग नाउ? No, sir, I said I didn't get it. हाँ ठीक है, ओके. रीड, पढ़िए. रीड द फर्स्ट लाइन. Read it. I want to hear you reading it. Shown I by can't. aldehydes and ketones with. Can you hear me? With? Sir? हाँ, I can hear you. Aldehyde and ketones with? With? I can't hear you now. Can't hear you at all, Lubna. Kulsum, आप बताइए. You did not understand this reaction. Yes, Kulsum. Can't hear you. अरे आप लोग का माइक वाइक ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे बात, मतलब जब बात ही नहीं हो पाएगी तो हम समझाएंगे क्या, है ना? इसमें वही है, आप लोग को एक एक चीज बतानी पड़ेगी, है ना? आप ये फ्रैगमेंट देखिए. I cannot hear you at all, Kulsum. I cannot hear you at all. Can anyone hear Kulsum? Akshay, Atif, anyone?
Lubna, what happened? Can you turn your mic on now? Yes, Lubna. तो देखिए ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम माइक ऑन कर, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम माइक ऑन करके या तो आप लोग माइक को एक ठीक रखा कीजिए। पता नहीं क्यों आप लोग की आवाज नहीं आती है। सी, आप लोग सबसे पहले डिटेक्ट कीजिए सी डबल बॉन्ड वो कहाँ पे है। ओके, लिसन दिस वेरी केयरफुली, इट्स नॉट वेरी टफ। यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी, अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, सो यू सी सी डबल बॉन्ड ओ वेयर इट इज द सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, नाउ Lubna and Kulsum, I want your answer in the chat. Which carbon atom has the C double bond O in A structure and in B structure? बताइए। ऐसे लिखिएगा, A में कहाँ पे है and then B में कहाँ पे है। Send the answer like this in the chat. Where is the carbonyl carbon in A and B? A में थर्ड में, B में फोर्थ में। ठीक है, now you tell me which atoms are attached to the third carbon in the A structure? A में C double bond O के adjacent में कौन कौन से हैं? अगल और बगल दोनों तरफ देखिए आप। We have, what are the two carbon atoms that is adjacent to? लुबना, आपके जवाब भी नहीं आ रहा है। आप लोग को समझना ही नहीं है कि आप आंसर भी नहीं कर रही हैं, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी। व्हाट हैपेंड लुबना? लुबना, कैन यू हियर मी? कैन यू राइट इन चैट समथिंग और आर यू नॉट हियर? नहीं, बहुत टाइम जाता है। आप लोग इस तरह से, मतलब या तो कनेक्शन ठीक रखिए या तो माइक ठीक रखिए, कुछ तो जवाब भी नहीं दे रही हैं। हाँ कुलसम, टेल मी, व्हाट आर द टू कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू द थर्ड कार्बन इन ए स्ट्रक्चर? थर्ड के अगल बगल कौन से कार्बन हैं एडजेसेंट? हाँ, ए में CH2 है और बी में, ए दोनों में CH2 है, राइट? दिस इज ऑल्सो CH2। दो हैं आपके पास, 2 and 3। व्हाट अबाउट दिस फोर्थ कार्बन? बी में जो फोर्थ कार्बन है, इट हैज 3 and 5। 3 में क्या है बताइए? 3 में क्या है? CH2 है, CH3। हाँ, सो कैन यू सी दिस C डबल बॉन्ड और CH3? यही तो रिएक्ट करता है ना। वी शुड हैव दिस फ्रैगमेंट, करेक्ट? यस और नो? सो which compound has this fragment, A और B? बस यही बताना था यहाँ पे। which compound has A में? अरे यार, क्या बात कर रही हैं आप कुलसुम? A में कहाँ है? B में ना है सब कुछ। तो फिफ्थ कार्बन ये CH3 तो यहाँ पे है ना। ये अजीब हाल है भाई। कुलसुम, व्हाट हैपेंड? आप माइक ऑन करके फिर से ज्वाइन कीजिए। पता नहीं आवाज, ये आंसर कर रही हैं। अल्लाह अकबर, सच एन इजी क्वेश्चन। कुलसुम, क्यों आप हार्ड बना रही हैं इसको? आपने खुद जब बोला यहाँ पे CH3, यही हमको समझ नहीं आता बच्चों का। वो खुद बोल रही है CH3 है फिफ्थ में, लेकिन नहीं, ए होगा सर आंसर आएगा। ए और बी, which will give the positive iodoform test? A or B? This is benzaldehyde and this is acetophenol. जल्दी आंसर करिए भाई लोग। ध्यान से आप लोग ना सुना कीजिए। लुबना, व्हाट हैपेंड? आपको क्लास से बाहर जाना है क्या? आप आंसर भी नहीं कर रही हैं। यू आर नॉट इन द क्लास और व्हाट हैपेंड? लुबना, कैन यू हियर मी? चलो, हाल है बच्चों का बिल्कुल।
It's the same question here, Akshay, which is going to give the positive iodoform test. Yes, Kulsum, correct. Yes, Akshay, correct. B will give positive iodoform test because here we have, this is what? This is CH3. Right, next. Aldol condensation. Right, the first point. Shown by aldehyde and ketones containing at least one alpha hydrogen. Containing at least one alpha hydrogen. Lubna, if you can hear me, I did not get any reply. आप या तो Learnivio को message कर रही हैं, you have to message to Salim Raza, okay? Not to Learnivio. I have not got any answer from you. Shown by aldehyde and ketones containing at least one alpha hydrogen. And अगर आपने सालिम को मैसेज किया, मुझे मैसेज किया, अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा है मेरे पास, तो प्लीज रीजॉइन कर लीजिए, ठीक है? कनेक्टिविटी में कुछ दिक्कत हो सकती है. It's okay. Shown by aldehyde and ketones containing at least one alpha hydrogen. Okay, at least one alpha hydrogen. Raise your hand if you don't know what is alpha hydrogen. Raise your hand if you don't know what is alpha hydrogen. Otherwise, I will. आगे बढ़ेंगे फिर हम. Raise your hand if you don't know. अगर आप लोग को hand raise करने नहीं आता तो प्लीज चैट में मैसेज कर दीजिए, लेकिन कुछ हमको बता दीजिए कि आपको alpha hydrogen नहीं पता क्या होता है. Okay, all of you know what is alpha hydrogen. Right. So I will start with the first reaction, and here we understand how to form the product. Aldol condensation is shown when you have an aldehyde or ketone and it undergoes self condensation. वो अपने आप से ही react कर लेता है. What happens in aldol condensation? The first thing that you have to remember, it should have alpha hydrogen. Secondly, it reacts with itself. It reacts with itself. And what are the reactive sites? What are the reactive sites? See, reactive sites is first of all the carbonyl carbon. So you will, for example, I'm taking CH3, CHO, acetaldehyde. In this case, you'll draw the molecule like this. The drawing is very important. CH3 bonded to carbon atom, which is bonded to oxygen, and it is bonded to a hydrogen atom. So you will show all the atoms of the carbonyl carbon for the first molecule of acetaldehyde. Now, acetaldehyde will react with what? It will react with itself. That means another molecule of acetaldehyde and another molecule of acetaldehyde. You will show all the bonds of the alpha carbon. This is your alpha carbon. यहाँ पे आपके पास hydrogen है. You have this carbon. This has another hydrogen, and this has another hydrogen, and then you have C double bond O. इसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. You just write the CHO. Okay. Now what happens? This hydrogen atom, it goes and it attaches itself to oxygen atom here, and this CO bond breaks. CO pi bond breaks. Please see what happens here. Please see the changes, guys. You write the CH3 as it is. Reactive site was in दोनों के बीच में reaction हो रहा है. Okay, this carbon and this carbon. Please remember that. CH3 और बाकी सारी चीजें same रहेंगी. CH3 carbon. This carbon is going to get OH. Double bond O converts to OH, and then the hydrogen is as it is. ठीक है? जो भी bond हो यहाँ पे, hydrogen हो, R हो, कुछ भी हो, as it is रहेगा. Then you have another bond with this carbon atom. This carbon atom will have two hydrogens. एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के पास चला गया, तो मेक इट अल्कोहल, एंड देन यू हैव द CHO as it is. Now this is known as beta hydroxyaldehyde. This is the alpha carbon, this is the beta carbon, and this is known as beta hydroxy aldehyde. Now further, when you heat it in the presence of acid,
This alcohol will show dehydrohalogenation. Sorry, it is going to show dehydration reaction, which is going to liberate the water molecule. So water will be removed from this molecule. Water will be removed and you will get a double bond between alpha and beta carbon. So you have CH3, CH, double bond CH, single bond CHO. Now this is known as, this is alpha carbon, this is beta carbon, alpha beta unsaturated aldehyde. Alpha beta unsaturated aldehyde. Now please listen, don't write. Please listen, don't write now. We are taking the case of acetone, which is a ketone. For example, you have a ketone like this. नहीं अभी लिखना नहीं है ना, हम बता देंगे जब लिखना है. अभी सुनिए, प्लीज सुनिए, यहाँ पे अभी लिखिए मत कुछ भी. Acetone, you will be given the structure like this: CH3, COCH3. Whenever you see CO, it is like this: double bond O, CH3 and CH3. Now writing in the case of aldehyde is also the same. First of all, you will write one molecule of acetone and showing all the bonds of carbonyl carbon. So you'll have CH3 bonded to carbon with a double bond and CH3 plus. You will write all the atoms of all the bonds of the alpha carbon. So both of these are alpha carbon, so you can write any one of them. I'm showing this carbon atom with its 3 hydrogen like this. Single bond carbon with a double bond, and then we have CH3. Now again, the same thing happens here. This hydrogen goes there, attached to the oxygen atom, and you will get CH3, COH, and here we have the CH3 as it is, no change there. Single bonded to carbon atom, which is having 2 hydrogens, which further is attached to C double bond O, which is further attached to CH3. Again, यहाँ पे हम वही बता रहे हैं आपको, जो भी reaction हो रहा है, it is between these 2 carbon and the rest of the carbon atoms, COCH3, this CH3, this CH3 is as it is. Don't have to worry about that. First of all, have focus, understand where the reaction is happening. Then again, same thing is going to happen here also. Now this is what? Beta hydroxy. This is the alpha carbon. This is the beta carbon. This is beta hydroxy ketone. H plus and heat, you will get CH3, carbon. This OH, H2 is going to leave and you will have CH3 here, doubly bonded with CH, singly bonded with C double bond O and CH3. ठीक है, अभी भी आप देखिए ना प्लीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये देखिए वैसा ही है, ये वैसा ही है. This is still the same, this is still the same. This fragment is still the same, this fragment is still the same. All the reaction is happening where? All the reaction is happening in this part. All the reaction is happening in this part. So focus on the carbonyl carbon and the alpha carbon. Chaliye, please write this down. Please write this down. Done, Akshay?
अक्षय प्लीज लाइक यूज माइक इफ यू आर एबल टू. कभी कभी चैट में नोटिफिकेशन नहीं आता है हमें. Okay, sir. डन. Yes, sir. Please write aldo condensation completely. Please raise your hand once you're done. Anyone still writing? Kulsum, Kinza, Hiba, Atif, anyone? Done, sir. Okay. इसका सबसे पहले आपको क्या करना है? You have this molecule. You have to show me how are you going to write the reactants. जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है? प्लीज ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना? गलती नहीं करना, एक एक चीजें बताते हैं आप लोगों को, तो ध्यान से सुनिएगा. You have to show एक मॉलिक्यूल में show all bonds of carbonyl carbon. ठीक है? यहाँ पे show all bonds of अल्फा कार्बन. अब सबसे पहले ना आप लोग यही कीजिए कि अल्फा कार्बन कौन सा है. 1 2 3 विच इज द अल्फा कार्बन? टेल मी गाइस, चैट में बताइए विच इज द अल्फा कार्बन. करेक्ट हमजा. All of you please answer. I want answer from everyone. Either answer something or write don't know. Correct Lubna, very good. Can you repeat what you said? What is the alpha carbon? What is the alpha carbon here? 1 2 or 3. अब आवाज नहीं आ रही क्या ठीक से अक्षय? Sir, now it's clear. Sorry? Sir, I can hear you now. अच्छा, you can hear you now. Okay. आतिफ ने आंसर किया है, किंसा ने आंसर किया है, हमजा ने आंसर किया है, लुबना ने आंसर किया है, कुलसुम ने भी आंसर कर दिया. Okay. Who else? Hiba is remaining. Hiba, please answer. Yeah. Kinza, can you please turn your mic on? Yes, sir. क्या होता है अल्फा कार्बन? Um, I don't know the जी. definition, but हाँ, फिर भी जो भी आपको पता है, हम डेफिनेशन भी नहीं पूछ रहे हैं. आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है, कैसे आप ये करती हैं, अल्फा कार्बन कौन सा है? carbon which is attached to the functional group, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पे? CHO, कौन सा कार्बन अटैच्ड है इससे? CH2, सेकंड कार्बन या फर्स्ट कार्बन? second one, आपने क्या लिखा है आंसर में? first one. क्यों? I got confused के
नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कंफ्यूज नहीं थी आप, आपने CH3 देखा, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 होगा, नहीं इसीलिए हम। नहीं, फिर किसमें कंफ्यूज हो गई आप? आई थॉट कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है उसके साथ जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा होता अच्छा नहीं नहीं ठीक, ये अल्फा होता है, उसके अल्फा से जो अटैच होता है वो बीटा होता है, उसके बाद जो अटैच होता है वो गामा होता है, उसके बाद जो अटैच होता है वो डेल्टा होता है, ठीक है। है। यस सर। अल्फा बीटा गामा। चलिए, तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है, प्लीज कम से कम इतना ही बनाइए आप लोग, उसके बाद अगर आप लोगों को ये बनाने आ गया तो फिर आगे के प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस इज प्रोपेनल, aldol कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल। अच्छा, एक चीज हमने लिखा नहीं है, बट ऑल ऑफ दीज रिएक्शन दे हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अ माइल्ड बेस, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है, प्लीज राइट एंड सेंड मी, आई एम गोइंग टू गिव यू गाइस लाइक, चलिए 5 मिनट भी दे देते हैं आप लोग, 5 मिनट में करके बता दीजिए आप लोग, प्लीज सेंड, अगर आप लोगों ने कर लिया तो जल्दी, ठीक है ना। अच्छा किंजा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने दिया था ना टेस्ट? हाँ किंजा, यस सर। हाँ तो आपको ये मिल गया होगा आंसर की, यस सर। आंसर की, ठीक है। हमने बोला किंजा नाम की है, वो पूछते रहती है आंसर की के बारे में, देखिए इस बार उन्होंने आंसर की टाइप करके दिया है बिल्कुल। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। Hello, sir. जी बताइए। Sir, can you please say what we are doing? Like what you told us to do? I didn't hear, sir. आई एम सेइंग कि you have to write this reactants in this manner, इस तरह से लिखना है आपको प्रोपेनल के लिए, as we have done for acetaldehyde and acetone ना, Yes. ठीक है, उसी तरह से आपको इसमें लिखना है। You have to show all the bonds of carbonyl of one carbon, पहले कार्बन का सारा कार्बन जो भी बॉन्ड्स उसको अच्छे से दिखाइए, नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन है उसके आप सारे बॉन्ड्स अच्छे से दिखाइए, ठीक है। इतना करके प्लीज सेंड दी आंसर ऑन माय व्हाट्सएप। तो कहाँ रिलोकेट कर गए आप अक्षय? I was sitting in the bedroom. Now I moved to my room. घर के अंदर ही रिलोकेट हो गए Yes, आप? yes, yes.
हाँ गाइस, 5 मिनट हो गए। प्लीज सेंड दी आंसर्स गाइस। रिएक्टेंट लिखने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है? सिर्फ रिएक्टेंट लिखना था आप लोगों को उस फॉर्म में। आई होप आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही लिखा हुआ होगा उससे। प्लीज सेंड दी आंसर्स गाइस क्विकली। Sir, I have sent, but it's loading. Sir. अच्छा, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, आतिफ, हमजा, हिबा, किंजा, लुबना। व्हाट अबाउट यू गाइस? What happened? WhatsApp is down or what? Sir, did you receive now? Yeah, I just received yours. ठीक है। नहीं, देखिए आपने गलती की ना। You have to expand all the carbons, all the bonds of which carbon? Tell me. एक स्ट्रक्चर में बताइए। All the bonds of which carbon? In one structure, you have to expand all the bonds of Akshay. Which carbon atom? This is 3 C2. नहीं, तो हमने बताया था। आप कहाँ थे? Show all bonds of carbonyl atom. ये हम पहले भी बोल रहे थे ना, आप नहीं सुन रहे थे क्या? एक कार्बन में आप show all the bonds of carbonyl carbon, and then you show all the bonds of alpha carbon. You heard this or you did not hear this? No, sir, I didn't. फिर से करके दीजिए। एक्सपैंड शो ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बोनिल कार्बन। वैसे ही होना, वैसे ही हो रहा है ना रिएक्शन। CH3 में नहीं जा रहा ना, अल्फा कार्बन। वही तो हम इतनी दफा से समझा रहे हैं आप लोग। कार्बोनिल कार्बन है, अल्फा कार्बन। आपने रिएक्शन किसके साथ किया? बीटा कार्बन के साथ किया है। कैन यू सी दैट? Okay, yes, yes. सेम थिंग हमजा। देखिए गाइस, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। इसके मुंह पे कौन रहेगा? टेल मी गाइस। इसके मुंह पे कौन रहेगा? अल्फा कार्बन रहेगा। व्हाट इज द अल्फा कार्बन? CH2। कौन रहेगा इसके मुंह पे? प्लीज, आई वांट टू हियर यू गाइस। सारा बिल्कुल हमको टेल मी। which carbon which carbon will be just in front of this carbonyl carbon? Which carbon will be? किंजा, लुबना, अल्फा आवाज नहीं आ कार्बन। रहा, बोलिए। अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा है? CH2। तो कार्बन यहाँ लिखा आपने यहाँ पे। इसके पास क्या है? एक हाइड्रोजन। आपने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं ना इसमें। 1 2 3। ये अल्फा कार्बन का होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अल्फा कार्बन हमेशा। हाइड्रोजन, Okay. हाइड्रोजन, CH3 एंड देन CHO। ये जाएगा यहाँ 1 2 3 कार्बन एटम। 1 2 3 कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम यहाँ पे जो है, दिस इज गेटिंग OH। इसके पास एक हाइड्रोजन था एज इट इज। देन इट इज गेटिंग अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम यहाँ पे, जो आपका अल्फा कार्बन था। ये कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है एज इट इज। ठीक है, अभी मत बनाइए, अभी देखिए, समझिए। उसके बाद CHO है। H प्लस एंड हीट, ये वाटर निकल जाएगा यहाँ से। अल्फा बीटा कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो 1 2 3 कार्बन एटम। फोर्थ कार्बन एटम देखिए, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम बना लीजिए आप लोग। यहाँ पे CHO दे दीजिए और फोर्थ कार्बन में एक CH3 है। थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बनाना बहुत आसान है इन सब चीजों को, लेकिन यहाँ ये आपका जो है ना, ये सही होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, here you have CH2, here you have CH2। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन कार्बन एक में आपको कार्बन कार्बन शो करना पड़ेगा। सो यू हैव 1 2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसके बाद दिस कार्बन इज ऑल्सो हैविंग
2 groups like this, ठीक है। और इसके मुंह पे कौन रहेगा, CH2 वाला कार्बन। So, आप इसको ले लीजिए, तो CH2 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, एक है इसके पास C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड है इसका CH3। फर्दर यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस ओनली, CH2 CH3, ये जाएगा यहाँ। So you have 1 2 3 carbon atom which is having an OH group, and इसके पास 2 कार्बन और हैं। Now it is bonded to a carbon atom which has a hydrogen and which has a CH3, which further has a C double bond O। यहाँ से फिर हम ये कर सकते हैं C double bond O, CH2 and CH3। अब इसमें मान दीजिए पानी के साथ हीट, this H2O will go away, so you will have 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स को बनाई, 2 3 4 5 6 7। सेवेंथ में कुछ नहीं, सिक्स्थ में कुछ नहीं, फिफ्थ इज हैविंग डबल बॉन्ड O, फोर्थ इज हैविंग CH3 एंड थर्ड इज हैविंग 1 2 कार्बन एटम्स लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 4 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड O बन जाएगा। दिस इज व्हाट 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। छापी प्रैक्टिस कीजिए इन सब चीजों की, ठीक है। द बेसिक फंडा इज सेम ना। हियर आल्सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मेड द कार्बोनिल कार्बन स्पैंड करके, और यहाँ पे कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। CH3 लास्ट वाला कार्बन मत कीजिएगा प्लीज, अल्फा कार्बन, ऑलवेज रिमेंबर अल्फा कार्बन। छापी जल्दी। Done everyone? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है, ठीक है। Okay. ध्यान सुनिएगा। अब सीधा सीधा आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर कैसे लिखना है, अब ये ट्रिक उन्हीं को समझ में आएगा जिनको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा हाथ मूव करके अपना, अब देखिए हमको भी तो 1 2 3 4 5 6 7 करना पड़ा ना। बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ही हमको आ जाए सीधा प्रोडक्ट ये हम लिख दें। नो, यू हैव टू डू द नंबरिंग, ठीक है। यू हैव टू डू द नंबरिंग। नाउ प्लीज लिसन। एल्डोल के प्रोडक्ट्स बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको वही सेम चीज है, क्या आना चाहिए, अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, एंड यू शुड आल्सो नो वेयर इज द कार्बोनिल कार्बन। इसी एग्जांपल को लेते हैं जो कि आपका काफी टफ था ना, ये वाला एग्जांपल जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। हियर यू हैव C डबल बॉन्ड O, आपने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब अल्फा कार्बन को ले लीजिए और इसके मुंह में ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये होना चाहिए आपके पास। कार्बोनिल कार्बन के मुंह पे कौन आ रहा है बताइए, दिस इज दी अल्फा कार्बन। यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस, हाँ या ना? Yes, sir. सर ठीक है। अब बस इन दोनों को मिला दीजिएगा, डबल बॉन्ड से ही। बस ये आपका क्या आ चुका है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट OH नेगेटिव, सेकेंड में आपके पास आपने पानी और हीट डाल दिया। बात आ गई समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए भाई लोग। Yes. ठीक है, आप देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन आटम है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 में क्या है, डबल बॉन्ड, 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। 3 में डबल बॉन्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, फोर्थ में एक कार्बन आटम CH3, फिफ्थ में इथाइल ग्रुप इस तरह से, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। सेम वही प्रोडक्ट बनाया है, हाँ या ना बताइए। सेम प्रोडक्ट के Yes, साथ, sir. ठीक है। अब लेकिन ये आएगा किसको, जिसको नंबरिंग कम से कम करने आता हो, है ना। आप लोग कम से कम उतनी मेहनत कीजिए कि नंबरिंग कर ले आप लोग। सेम चीज कीजिएगा अगर आपके पास एल्डिहाइड भी हो, 1 2 3 4 5 कितना भी एल्डिहाइड हो जाए, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसको कर दीजिएगा पलट। हम बोलेंगे ऐसे नहीं लिखना, हमको लिखना है ऐसे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, है ना। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। और इसका अल्फा कार्बन कौन सा है भाई, इसका अल्फा कार्बन है ये वाला, फिर अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को रखिए बिल्कुल यहाँ पे, ऐसे बोली, ठीक है। हियर यू कैन हैव व्हाट, दिस इज द अल्फा कार्बन यहाँ पे, इसके यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, 1 2 3 4, इन दोनों को कर दीजिए मिक्स, 1 2 3, ये हाइड्रोजन का ऐसी ऐसी, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बता दिया हमने आप लोगों को। सेम आपका अगर आपके पास साइक्लिक भी हो ना तब भी हो जाएगा। डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, इसका इस वाले कार्बन के साथ आपको कर देना है डबल बॉन्ड O, ठीक है। इन दोनों को कर दीजिए मिक्स, डबल बॉन्ड O। अरे बात आ रही है समझ में, और देख लीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3, तो बोलिएगा कि नहीं इसको ऐसे मत, C डबल बॉन्ड O को यहाँ पे लिख देते हैं, एसिटोफेनॉन ही है ये, ठीक है। एसिटोफेनॉन ओनली, CH3। अब इसी के मुंह के बिल्कुल सामने ये CH3 वाला मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड O, और इधर फिनाइल ग्रुप कर दीजिए, दिस इज द CH3। इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, यू विल गेट एक बेंजीन यहाँ पे है इसे, CH3 यहाँ पे इसी तरह से, डबल बॉन्ड O एंड देन द बेंजीन रिंग। चलिए, काफी लिख लिया आप लोगों ने, नहीं लिखा तो छोड़ दीजिए। अब लिखिए नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एट लीस्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद एट लीस्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स with at least one alpha hydrogen undergoes self-condensation, undergoes self-condensation in the presence of dilute alkali, the presence of dilute alkali to give beta hydroxy, to give beta hydroxy aldehyde or ketone, which on heating with dilute acids undergoes dehydration,
undergoes dehydration and forms alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। छापिए भाई लोग, छापिए जल्दी छापो। उसके बाद एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अरे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इसको। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और सिर्फ ट्रिक याद करके चल जाइएगा। रिवीजन में ना ये सारी चीजों के बस हम ट्रिक ही कराएंगे, ठीक है ना। समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को एक बार, उसके बाद धड़ाधड़ आंसर। ठीक है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ आ गया समझ में। उसके बाद ट्रिक से सीधा सीधा प्रोडक्ट, नथिंग एल्स। ऑल ऑफ यू डन राइटिंग दिस एल्डोल Yes. कंडेंसेशन? देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अभी तो सेल्फ हो रहा था, दैट वाज द अबव केस वाज सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इन व्हिच यू हैड ओनली वन aldehyde or only one ketone. But in this case you are going to have two different aldehyde or two different ketones or one aldehyde, one ketone, whatever the combination may be. Okay, whatever the combination. Now please see, when you have cross aldol condensation, for example, you have acetaldehyde, we have CH3 CHO plus we have CH3 CH2 CHO. ठीक है, अब देखिए प्लीज ध्यान सुनिएगा, we have ethanol and propanol. What do we have? We have ethanol and propanol in the presence of a dilute base OH negative, in the presence of dilute base OH negative. Now when we have ethanol and propanol, but it is not necessary na, that all the ethanol molecules would know that there is a propanol molecule. Is that right? Yes or no? There will be some ethanol molecule which will be surrounded with only ethanol molecules and they will not know that there is any propanol molecule. So those ethanol molecules which are surrounded only with ethanol molecules, they will say that, okay, fine, no one is here, I have to do self-aldol condensation. So first of all, they will give you 1, 2, 3, 4 CHO, and the beta is going to have OH, further H plus, and heat. तो क्या मिल जाएगा आपको 1, 2, 3, 4 CHO. अब हाँ ना कुछ बोलिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या हो गया यहाँ पे, है ना। हम तो समझाएंगे भी नहीं अब। Again, I am saying the ethanol molecules which were not surrounded by propanol molecules, they will undergo self-aldol condensation. So you can have some self-aldol condensation from ethanol molecule. Similarly, you will have self-aldol condensation from the propanol molecule, which will be like this. You have 1, 2, 3. So there will be 5, 2, 3, 4, 5 CHO. Alpha and beta will be having OH. This will be having CH3. अभी इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमने बना चुका था, है ना। इस दोनों के पहले बनाया हुआ हमने प्रोडक्ट इसी क्लास में। CHO, CH3 and a double bond here. ठीक है, so these are the products of what? These are the products of self aldol condensation. ठीक है, तो क्रॉस में ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको क्या मिलेंगे, सेल्फ के भी मिलेंगे। क्यों? Because not all molecules know ना, not all molecules are surrounded by other molecule. कुछ सेम भी साथ में होंगे। Ethanol will be only with ethanols. So these are the two products from self. ठीक है, these are the products from the self. Now, in one case, please listen very carefully. In one case, you will open up the carbonyl carbon of ethanol and you will attach the propanol's alpha carbon. दूसरे केस में propanol का carbonyl carbon खोल दिया आपने and attach कर दिया क्या, alpha carbon of the ethanol. So I will take the first case. Let us suppose you are having this CHO. This CH3 will be here as it is. And अगर आपने देखिए, अगर यहाँ पे देखें, प्लीज देखिए आप, here we opened up the, जिसका हमने C double bond को खोला उसी को मिल गया OH, उसी को मिल गया क्या, OH. So we have opened up the ethanol molecule CH3 CHO का carbonyl. So one carbon atom, second carbon atom, दो ही carbon atom है यहाँ पे. This is going to get OH. ठीक है, and it also has hydrogen, that will be as it is. This will be attached to the carbonyl carbon, नहीं, this will be attached to the alpha carbon of propane. Alpha carbon कौन सा, ये है, तो ये कार्बन लिख दिया आपने, इस कार्बन के पास
एक तो इसके पास CH3 है, नहीं एक तो इसके पास CHO है, एक इसके पास CH3 है और एक इसके पास हाइड्रोजन है। बस अब इन दोनों को निकाल दीजिए बाहर H+ और हीट के केस में। You will get 1 2 3 4 carbon atoms, 1 2 3 4 carbon, fourth में CHO, this is having a CH3 group and there is a double bond here. Now let us look at the case when you are having the carbonyl of propanol open up. ठीक है, so you will have CH3 CH2 कार्बन, इसका हो जाएगा OH और इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, सिंगली बॉन्डेड विद द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा है? कार्बन। एक हाइड्रोजन तो उसका वहां चला गया, 2 हाइड्रोजन बचे हैं which are here. This is of ethanol further bonded with CHO. आप कर दीजिए H+ in the case of heat will have 1 2 3 4 5 carbon atoms, 5 है 1 2 3 4 5 CHO and अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, ये यहाँ से निकल जाएगा। प्लीज राइट दिस डाउन गाइस। ये दो these two products are from cross। समझ में नहीं आया तो दिमाग लगा के थोड़ा देर बैठ के क्लास के बाद चिंतन मनन कीजिएगा, आ जाएगा समझ में। एरो वैरो घुमाइए, हाथ से पेंसिल चलाइए तो आ जाएगा। राइट दिस डाउन क्विकली। ये लिखिए आप लोगों ने, हाँ या ना? डन एवरीवन? गवर्नमेंट जी लिखिए। कहाँ चली गई? Done guys, yes or no, please tell me. डन सर। Right, next देखिए, write a note. Aldehyde and ketones containing no alpha hydrogen can undergo cross aldol condensation with an aldehyde or ketone containing alpha hydrogen. एक टिप लिख लीजिए। इस केसेस में ना, जब आपके पास एक एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरा है जिसमें है, तो उसमें क्या कीजिएगा, ओपन अप द कार्बोनिल कार्बन of aldehyde or ketone containing no alpha hydrogen। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। और इसमें आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा।
बताइए किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ए या बी? Which does not have alpha hydrogen? Write in chat. A और B किसमें नहीं है? Which does not have alpha hydrogen? Waiting for Kinza, Hiba, and Lubna, Atif also. Which does not have alpha hydrogen? Hamza and Akshay correct. A or B which does not have alpha hydrogen? Correct, Lubna. Very good. Waiting for Kinza, Hiba, and Atif. Correct. Very good. Yes, correct. Kinza. Just waiting for you. मार्क कीजिए, आप खोलिए, देखिए आपका आंसर सही है या नहीं है। किंजा आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। आपको डाउट्स हैं यहाँ पे, आप प्लीज खुद से लिखिएगा कंपाउंड्स को, खुद से उसमें डालिएगा फंक्शनल ग्रुप, खुद से बताइएगा कौन सा अल्फा कार्बन है, कौन सा अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। किसमें है किंजा अल्फा हाइड्रोजन? आपने क्या आंसर किया? अल्फा हाइड्रोजन किसमें है बताइए, ए या बी किसमें है? ए में अल्फा हाइड्रोजन है? यस किंजा, यस, ए में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। नहीं है, ठीक है, बी में है। ओके, तो किसको खोलना है, किसके कार्बोनिल को खोलना है, ए या बी? किसके कार्बोनिल को खोलना है, ए के या बी को? किसके कार्बोनिल को खोलना है? एक यू हैव टू ओपन। हाँ, और जिसका कार्बोनिल होता है उसका ऑक्सीजन क्या बन जाता है? टेल मी गाइस। जिसका कार्बोनिल होता है, जिसका कार्बोनिल खुलता है, द atom or the molecule whose carbonyl will open up, what happens to the oxygen atom of that carbonyl? देख के बताइए, ऊपर ऊपर के रिएक्शंस में देख के बताइए उनके साथ क्या होता है जिनका कार्बोनिल खुलता है। इस ऑक्सीजन का क्या होता है? What happens to this oxygen? What happens to this oxygen? What happens to this oxygen? See in the product and tell me what happens to this oxygen. इस ऑक्सीजन का क्या होता है जिसका कार्बोनिल खुलता है? हाँ, आखिरी में रिमूव होता है, लेकिन पहले वो OH बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स OH, सो वी हैव हाइड्रोजन, कार्बन, इसका बन जाएगा OH, इसका रहेगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और इस फर्दर बॉन्डेड टू दिस कार्बन आटम। दिस कार्बन आटम हैड 3 हाइड्रोजन्स, बट एक चला गया ऑक्सीजन के पास, तो 2 बचे, फॉलोड बाय CHO, ठीक है। यहाँ से निकाल दीजिए बस अब पानी, H प्लस एंड हीट, यू विल गेट 1 2 3 कार्बन आटम्स, थर्ड में CHO है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड। Similarly, if you have यहाँ पे भी आपके पास A में नहीं है, तो इसका खोल देंगे, राइट। वी विल ओपन अप दी कार्बोनिल ऑफ दैट कार्बन, विल गेट, this will become OH, further bonded to carbon with 2 hydrogens, further bonded to CHO. After H plus and heat, we are going to get 2 carbon atoms, third carbon CHO, and a double bond like this. Right, next. Determining reactants of aldol. So if you have been given the products, they will ask you what will be the reactant इसके लिए। तो आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं, they give you either beta hydroxy, aldehyde और कीटोन। तो क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल yeah, 1 2 3 4 and 5, this is having a CH3, this is having a CHO, this is having a CH, यहाँ पे आपके पास OH है। आइडेंटिफाई दी अल्फा एंड बीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा।
break the bond between them, break the bond between them, and then what you need to do is convert the OH to double bond O. OH में से OH को हटाइए, डबल बॉन्ड O कर दीजिए, तो 1 2 3 कार्बन आटम है यहाँ पे, 1 2 3 बॉन्ड टूट गया, उसके बाद this will have double bond O, so obviously this will be having hydrogen. अल्फा में क्या हो जाएगा, CH3 CHO. अल्फा में आपको डालना है एक हाइड्रोजन, और बीटा में आपके पास OH को कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड O में. So what are the steps? Break alpha beta bond. Secondly, change COH in beta carbon to C double bond O. Change COH in beta to C double bond O. चाहे वो एल्डिहाइड हो कीटोन हो, सेम आपके पास स्टेप्स है. Put H atom on alpha carbon. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड लाइन सेक्शन में आपको अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है. दिस वजह से वी हैव नॉट चेंज एनीथिंग, जस्ट ब्रोक द बॉन्ड एंड गिव इट यू देयर लाइक दैट. What will happen if you have alpha beta unsaturated aldehyde or ketone? If you have B case in which you have alpha beta unsaturated aldehyde or ketone, for example, you have double bond CHO. ठीक है, now in this case again this is alpha, this is beta. alpha and beta के बीच में bond break कर दीजिए. then the beta carbon में आपको क्या मिल जाएगा, give it double bond O. 1 2 3 4 carbon atoms, C double bond O, बचा क्या, एक हाइड्रोजन, प्लस अल्फा में 2 हाइड्रोजन्स, but again we don't have here, we don't show hydrogens in the bond line structure, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. what we have to do, break alpha beta double bond, put double bond O on beta carbon, right, next put 2 hydrogen atoms on alpha carbon. चलिए, all of you done, yes or no, please tell me.